Welcome back to this lecture. In this lecture, we will study the adjoint of a linear operator. In the whole discussion of linear transformations, the adjoint of a linear operator is quite simple and informative. Let me show you one beauty of this adjoint operator. So suppose we have a linear operator from V to V, and since we have a vector space, we can always assume an ordered basis and hence an orthonormal basis beta. And suppose I will tell you the definition, but now suppose that this u is adjoint of this t, that is also a linear operator from v to v. Now since we have a linear operator u and we have an orthonormal ordered basis beta, then we can always talk about the matrix representation of u in beta. Okay, now if this u is adjoint of t, then this matrix is nothing but the conjugate transpose of the matrix representation of t in beta. Okay, so you can simply identify the matrix representation of u in beta, where this beta is any orthonormal orthonormal basis for v. Okay, so this is one beauty of adjoint operator of a linear operator t. Now we had a discussion of inner product x comma y, where x and y are two vector in vector space v, and we know that this is going to be a scalar. So basically inner product of v से f में एक फंक्शन को assume कर सकते हैं. हम क्या कह रहे हैं कि सपोज वी हैव अ फंक्शन g, linear functional g from v to f. Okay, then this g can be determined by this inner product x comma y. ठीक है, तो अगर g एक लीनियर फंक्शनल है v to f, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y in v such that we can write g of x is equal to inner product x comma y. So we have always this unique y. Okay, so हम हमेशा हर एक लीनियर ऑपरेटर को इस इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जिस y को हम रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, दैट y इज यूनिक इन v. Okay, so let me discuss this statement first and then we will come to the definition of adjoint of a linear operator. Okay, so let me discuss the theorem 6.8 first. So let V be a finite dimensional inner product space, okay, over the field f, and let g defined from v to f. कोई भी फंक्शन जो वेक्टर स्पेस से इसके फील्ड पर डिफाइन है उसको हम लीनियर फंक्शनल बोलते हैं. सो जी इज लीनियर फंक्शनल, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन okay, then there exists a unique vector y in v such that you can write g of x is same as inner product x comma y for all x belongs to v. ठीक है, अगर हम v के हर एक x के लिए g को लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डिफाइनिंग दिस g एंड वी आर डिफाइनिंग दिस g इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट x comma y. So in this part of theorem we have two part. So one is the existence of such y and then we have the uniqueness of this y. So let me write the proof. In the proof हमें सबसे पहले y को define करना है. So let me give an motivation for this. So since y इस y की फॉर्म में हम gx को define करने वाले हैं, so कहीं ना कहीं इस y को हम gx की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, so that we can have a bridge between y and g at a initial stage. Okay, so let me consider an orthonormal basis.
So let beta that is equals to v1 v2 एंड vn, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हम इस तरीके का एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमेशा सपोज कर सकते हैं। बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर v, okay, and let now we are defining a y. Since we have g, so in the form of g, we are defining y is the linear combination of vector of this vector of beta, and where the coefficient are of specific type I running from 1 to n, and we have g of vi bar time vi, ओके। सो बेसिकली g एक फंक्शन है v से f में, तो ये कोफिशिएंट ही है, स्केलर्स ही है। तो y को हम इन बीटास के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर द कोफिशिएंट आर स्पेसिफिक टाइप, or you can say the coefficient are defined with the help of the function g only, okay। now we are defining a function, हम इस तरीके के एक फंक्शन डिफाइन करेंगे that have this y, okay। so let h is defined from v to f by h of x is equals to x comma y. We have this y as this form and we are defining hx like this, okay। now we will show कि ये जो hx है that is same as gx, ठीक है। then since inner product is linear in first component, हमने देखा था कि ये अपने फर्स्ट कंपोनेंट में लीनियर होता है और सेकंड कंपोनेंट में कॉन्जुगेट लीनियर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लीनियर भी बोल सकते हैं आप। देयरफॉर अगर ये इस पार्ट में लीनियर है और यही पार्ट हमारे एक्स के लिए इनपुट का काम, एच के लिए इनपुट का काम कर रहा है, दैट मीन्स दिस function must be also linear, okay। so I'm direct concluding that therefore h is also linear, okay। you don't need to verify कि h linear है या नहीं, you have inner product, then this inner product must be linear in first component, and from that you can conclude that h is also linear, ठीक है। now let I is in between n to j2, j is in between 1 to n. Now suppose we are having two function f1 and f2. We want to show that f1 is equal to f2 in inner product space v or some vector space v। तो हम इनको इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, वी वॉन्ट टू शो दिस, ओके। तो और ये दोनों डिफाइन है f1 एंड f2 दोनों ही डिफाइंड है v पर, ओके। v2 v1 से v2 या फिर v से v में डिफाइन है फॉर द सिंपल केस। सो व्हाट विल यू डू, यू जस्ट टेक अ basis, or here precisely we have already taken an orthonormal basis beta। now just identify the f1 image of every element of beta, then identify the f2 image of every element of beta, and if the respective images are same for every element of beta, then we can say this f1 is equal to f2 on this v, ओके। तो अगर किसी वेक्टर स्पेस v के बेसिस पर हम किन्हीं दो फंक्शन को इक्वल बता दें, देन दैट फंक्शन दोज फंक्शन विल बी इक्वल ऑन दी होल वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पर हमने h फंक्शन डिफाइन किया है एंड वी विल शो दैट दिस h इज नथिंग बट g। तो हमें बस h की बीटा के हर एक एलिमेंट पर इमेज आइडेंटिफाई करेंगे और हम शो करेंगे कि वो इमेज gx ही है, ठीक है। then let j is running from 1 to n, then what be the h image of some vj element in beta, ठीक है। so that is from the definition this will be vj comma y inner product, okay। now this is vj, then y is summation I running from 1 to n, then g vi bar time vi, right।
Now this is an inner product. So inner product is complex linear in the second component, और ये सभी coefficients ही तो है. Let me write in a precise way. You can write them as Vj comma, if you choose I equals to 1, then you will have G V1 time V1 bar plus G V2 bar time V2 plus, and so on. You will have G Vn bar time Vn. Okay. Now if you see this Vj with V1, then you will have, which is equals to G V1 Vj V1, राइट. क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट में है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट विल बी द सेम एलिमेंट. देन प्लस यू विल हैव जी v2, then bar of bar, so that will be gv2, and then time vj comma v2. Okay, plus somewhere we will have g vj, then vj with vj, right? Plus, and so on. You will have the last entry, that is g of vn, then vj with vn. Okay. अब हमें ये पता है कि v1 v2 vn ये सभी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस के पार्ट है, तो ये इनर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होंगे जब तक कि ये दोनों इंडेक्स सेम नहीं हो जाए. ठीक है, तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो, दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो, दिस विल बी इक्वल्स टू वन, क्योंकि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है तो हर एक एलिमेंट का नॉर्म हमेशा वन होगा, और जब भी हम कोई भी दो पेयर लेंगे उनका इनर प्रोडक्ट जीरो मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू g of v1 time 0 plus g of v2 time 0 plus, and so on, plus this g vj time 1. Okay, this is the norm of vj, square of norm of vj, plus, and so on, plus you will have g vn time 0. So in short you will have g of vj. So for j running from 1 to n, you have that h of vj is equals to g of vj. इसका मतलब बेसिस के हर एक एलिमेंट पर h और g दोनों सेम है. सो दिस implies that hx is equals to gx for all x belongs to v. Now we know what is hx. Hx is the inner product x comma y. So we can write, this implies that gx is equals to inner product x comma y for all x belongs to v, where this y is the summation I running from 1 to n g vi bar time vi. Okay, so this y is fixed. Okay, so this shows the existence of y. Now we will come to the uniqueness of y. Okay, so let me specify here. So here we are identify the existence of y. Here we are looking for that. Now we are coming to the uniqueness of y. ठीक है, और यूनिकनेस आपको पता ही है, जब भी हमें यूनिक प्रूफ करना है वी ऑलवेज सपोज टू. ठीक है, सो लेट देयर एग्जिस्ट सम y prime in v such that we are able to write g of x is the inner product x comma y prime, this. Okay, and that is for all x belongs to v. So you have that inner product x comma y, this gx is already defined x comma y, and that is equals to x comma y prime for all x belongs to v. From the property of inner product, if this is happening कि हर एक x के लिए this x comma y is same as x comma y prime, then this implies that this y must be equals to y prime, and hence
hence y is unique. Okay, so we use the property of inner product here.